Okay, today we are going to start the classification of anti-ulcer drugs. Means that what are those drugs? Those are going to counter the hyper secretions of HCl. ठीक है, वो कौन सी ऐसी drugs हैं जो कि HCl के प्रोडक्शन को क्या करती हैं, काउंटर करती हैं या नलीफाई करती हैं. ठीक है, तो वो हमने अब देखनी है. Classification of anti-ulcer drugs. Okay, then one by one I will the different classes of ulcer drugs. Right. Okay, the first class of anti-ulcer drugs is antacids. First class is antacids. Okay, this is the class, and then one by one I will write the name of drugs. Okay, antacids. There are different type of bases we use to न्यूट्रलाइज द HCl. ठीक है, तो ये जो एंटासिड्स है ना, इनमें जो हमारे पास जो ड्रग्स के नाम है, ये समझ लो जो केमिकल्स हैं. ठीक है, वो बेसिस हैं. ठीक है, वीक बेसिस हैं. ठीक है, like for example sodium bicarbonate. First one is sodium bicarbonate is the first one. Okay, the second one is calcium carbonate. Calcium carbonate. Okay, next one is magnesium hydroxide. Next one is magnesium hydroxide. Right, the next one is aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide. Okay, right. This is the first class of anti-ulcer drugs. I am just writing the class. The first one is antacid is class, and these four are the weak, basic, you can say drugs. Okay. The second class is H2 receptor blockers or antagonists. Okay. H2 receptors antagonists. Right. This is the class. Then I will write the name of drugs. The first drug is cimetidine. First drug is cimetidine. Cimetidine. Okay. The second drug is ranitidine. Ranitidine. Okay. The next drug is nizatidine. Nizatidine. The next drug is famotidine. Next drug is famotidine. Right. There are four drugs in this class. H2 receptor antagonist. Antagonist means these drugs are going to antagonize or oppose the effect of histamine, which is physiologically produced by enterochromaffin like cells. Right, हमें पता है कि जो हिस्टामिन रिलीज होती है एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल से, फिर वो अपने H2 रिसेप्टर्स के ऊपर आके बाइंड होती है और HCl के प्रोडक्शन को ज़्यादा करती है. तो इफ़ वी ब्लॉक दोज H2 receptors present on the parietal cells blocked by these drugs, cimetidine, ranitidine, nizatidine, famotidine, then we can nullify the histamine effect. Right, तो इस तरह इनको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्लास ऑफ एंटी अल्सर इज proton pump inhibitors. Proton pump inhibitors. Right, there are different drugs in this class. What is meant by proton pump? As you people know that parietal cell there is a pump or transporter, this one, and you people know that it is responsible for outflux of hydrogen ions and influx of potassium ions, because this pump is responsible for uh, hydrogen exchange, or as you people know that this H positive means proton. Positive means H positive means proton.
So that's why these drugs or this class of anti-ulcer drugs are known as proton pump inhibitors, because you people know that this is a proton pump. ठीक है ना, क्योंकि ये एक प्रोटॉन को या हाइड्रोजन आयंस को ये एक्सचेंज करता है, ठीक है, तो इसलिए इसको प्रोटॉन पंप बोलते हैं, ये अकेला जो है, जो कि हमने पीछे नॉर्मल फिजियोलॉजी में पढ़ा था। तो अब चूंकि बिकॉज दीज ड्रग्स आर द इनहिबिटर्स ऑफ दिस पंप, ठीक है, इसलिए फिर इनको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को पता है सोडियम हाइड्रोजन पंप, सोडियम कैल्शियम पंप और एक्सचेंजर, इसी तरह ये भी क्या है, एक एक्सचेंजर है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है एंटी पोर्टर सिम्पोर्टर, उसी तरह का ये भी है। अगर तो वो सोडियम से लिंक्ड है, ठीक है, तो आपको पता है उसको को ट्रांसपोर्टर कहते हैं, और अगर वो किसी और आयन से लिंक्ड है, ठीक है, और उसमें एटीपी यूज हो रही है, तो उसको हम क्या क्या कहते हैं, सिम पोर्टर और एंटी पोर्टर, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑफ ड्रग्स in the category of proton pump inhibitors, and you people are well familiar with these drugs. First one is omeprazole. First one is omeprazole, right? The next drug is S-omeprazole. S-omeprazole. The next drug is lansoprazole. Lansoprazole. The next drug is dexlansoprazole. Dexlansoprazole, right? The next drug is rabiprazole. Rabiprazole, right? Next drug is pantoprazole. Pantoprazole. So, okay, so there are 6 drugs in this category. Okay. Next is fourth class. इनको हमने एक जनरल नाम देते हैं, क्या उनके अंदर फिर डिफरेंट ड्रग्स हैं। फॉर एग्जांपल म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, इनको एक बड़ी जनरल हम कैटेगराइज करते हैं। म्यूकोजल, आपको पता ना जीआईटी म्यूकोजा, ठीक है, तो यहाँ से निकला है म्यूकोजल। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, ओके। So in the mucosal protective agents there are different subclasses, ठीक है। फर्स्ट सब क्लास है, उसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं 2000 प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, राइट। नेक्स्ट इज बिस्मथ कंपाउंड्स, बिस्मथ कंपाउंड्स, ओके। ये अभी ना क्लासेज हैं, ठीक है, और इसके अंदर भी फिर कुछ ड्रग्स के नाम है, अभी मैं उनको बाद में लिखता हूँ, अभी मैं सिर्फ सब क्लासेज लिख रहा हूँ। द नेक्स्ट इज सक्राल फेट, ओके। अभी ये जो ये तीन है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसमें फर्स्ट टू और द क्लासेस, फॉर एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, इसमें एक ड्रग है, ठीक है। इन बिस्मथ कंपाउंड्स देयर आर 2 drugs एंड सक्रालफेट इज इटसेल्फ इज अ ड्रग एंड इट एक्ट्स एज अ म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, ठीक है। ओके, तो बाकी का मैं नाम लिखता हूँ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में, ठीक है। ये सारे ड्रग्स के नाम आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। वाइवा में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। द एक्सटर्नल में आस्क यू पीपल क्लासिफाई एंटी अल्सर ड्रग, यू पीपल हैव टू गिव ऑल द नेम्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है। पहले क्लास का नाम फिर ड्रग्स के नाम, वो पूछेगा एंटासिड्स के ड्रग्स के नाम बताएं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स के नाम बताएं, ठीक है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के नाम बताएं। तो इस तरह आप लोगों ने उसको फिर क्या करना है, क्लासीफाई करना है। इन केस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग द ड्रग इज मीजोप्रोस्टोल, मीजोप्रोस्टोल, ओके। इन केस ऑफ बिस्मथ कंपाउंड्स there are 2 drugs or 2 compounds we can say, bismuth subsalicylate, bismuth bismuth subsalicylate, sub subsalicylate, the first drug or compound. The second one is bismuth subcitrate potassium, bismuth subcitrate potassium, okay. This is all about the classification of anti-ulcer drugs. Then one by one we will see the pharmacology of these different classes of anti-ulcer drugs. Then I am going to recap.
classification of anti-ulcer drugs. First class is antacids. Okay, uh, in antacid there are four drugs or compounds or weak bases: sodium bicarbonate, calcium carbonate, magnesium hydroxide, and aluminium hydroxide. Okay, the second class is H2 receptor antagonist, and in which there are four drugs: cimetidine, ranitidine, nizatidine, and famotidine. The next class is proton pump inhibitor, and there are six drugs in this category. First one is omeprazole, the second one is esomeprazole, the next one is lansoprazole, the fourth one is dexlansoprazole, the fifth one is rabeprazole, and the last one is pantoprazole. Next are the mucosal protective agents. And in mucosal protective agents, there are three subclasses. The first subclass is prostaglandin analogs, and in case of prostaglandin analogs, their drug is misoprostol. Okay. The second subclass is bismuth compounds, and in bismuth compounds, there are two uh, compounds: bismuth subsalicylate and bismuth subcitrate potassium, right? And the last one is cyclosulfate, which is itself a drug. Okay, this is all about the classification of anti-ulcer drugs.